बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। सी क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, पहले तो आप देखें पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट नंबर 4। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन f of x is equal to the square root of x square plus a square, where a is real number। इसका मतलब आपको बताने की कोशिश की गई है कि a is constant। आप डिफरेंशिएट करें, differentiate both the sides with respect to x, we write d upon dx of fx is equal to d upon dx of the square root of x square plus a square। f prime x is equal to, अब रूट को अगर रिमूव करें तो पावर हो जाएगी हाफ, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर हाफ। अब इसकी शक्ल सम और डिफरेंस वाली तो नहीं है, ये हो गया फंक्शन रेज टू द पावर n। इट इज जस्ट लाइक फंक्शन ऑफ x होल रेज टू द पावर n। Derivative of function raised to the power n, it is equal to n multiplied by function raised to the power n minus 1, x square plus a square raised to the power half minus 1। ये तो हो गया n function power n minus 1 into derivative of function। तो derivative of function, तो function की जगह पे है x square plus a square। Now it is equal to half multiplied by x square plus a square whole raised to the power half minus 1, it is minus half, multiplied by derivative of x square is 2x। अब क्योंकि a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही होगा, सो डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हाफ इंटू x square plus a square whole raised to the power half minus 1 multiplied by 2x। अब अगर आप और करें तो 2 तो हो जाएगा कैंसिल, बाकी बच जाएगा x डिवाइडेड बाय, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो पावर प्लस हाफ हो जाएगी। इसका मतलब द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इट इज x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, वो भी पहले देख लें। सी पार्ट नंबर 3। Part number 3 is f of x is equal to fifth root of x square plus 2x plus 3, x square plus 2x plus 3। इस तरह स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, फिफ्थ रूट का मतलब बन जाएगा पावर 1/5। तो ये हो गया भाई f of x is equal to x square plus 2x plus 3
रेज टू द पावर, क्योंकि फिफ्थ रूट है तो रेज टू द पावर 1/5. डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स. इट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 3 whole raised to the power 1/5. So use derivative of function raised to the power n again. F prime x is equal to 1/5 multiplied by function raised to the power n minus 1. X square plus 2x plus 3 whole raised to the power 1/5 minus 1. ये तो हो गया n function power n minus 1 into derivative of function. तो फंक्शन की जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. नाउ इट इज इक्वल टू 1/5 multiplied by x square plus 2x plus 3 whole raised to the power 1/5 minus 1. It is minus 4/5 multiplied by derivative of x square, it is 2x. Derivative of 2x is 2 and derivative of 3 is 0. इस स्टेज पे सम और डिफरेंस शो करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ इट इज इक्वल टू 2x plus 2 as it is divided by 5 into x square plus 2x plus 3 whole raised to the power 4/5. -4/5 है पावर. आप इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो पावर की साइन पॉजिटिव हो जाएगी. पावर की साइन पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब +4/5. न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इट इज 2 multiplied by x plus 1 whole divided by 5 as it is. पावर 4/5 को अगर मैं ब्रेक कर दूं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 4/5 है, हम इसे लिख सकते हैं पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/5. बिकॉज 4 into 1/5 इट इज 4/5. अब पावर 1/5 का मतलब फिर वापस इसे फिफ्थ रूट लिखा जा सकता है. तो 2 multiplied by x plus 1 whole divided by 5 as it is. Power 1/5 means fifth root. किसका fifth root? Of x square plus 2x plus 3 raised to the power 4. 4 raised to the power 1/5 था. 1/5 means fifth root like the given question. ये हो गई मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. अब आप देखें पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 एक आध दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है. पार्ट नंबर 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x divided by 1 minus x. Part number 1. F of x is equal to whole square root of 1 plus x divided by 1 minus x. Now differentiate both the sides with respect to x. Differentiate both the sides with respect to x. So we write d upon dx of fx is equal to d upon dx of square root whole square root of 1 plus x divided by 1 minus x.
अब स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स divided by 1 minus x whole raised to the power 1/2. Now, it is same as again function raised to the power n. फंक्शन की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है और n की जगह पे है 1/2. We use function raised to the power n which is equal to n which is half multiplied by function raised to the power n minus 1 यानी 1 plus x upon 1 minus x power half minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जगह पे क्या था? फंक्शन की जगह पे था 1 plus x डिवाइडेड बाई 1 minus x। फॉर्मूला वही यूज किया जो आपने पार्ट नंबर 3 में या पार्ट नंबर 4 में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू द पावर n which is n into function power n minus 1 multiplied by derivative of the function. Now half as it is 1 plus x divided by 1 minus x raised to the power half minus 1. It is minus half. आगे अगर आप देखें तो it is a fraction. फ्रैक्शन है तो आपके दिमाग में आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन की जगह पे है 1 प्लस एक्स और सेकंड फंक्शन की जगह पे है 1 माइनस एक्स। तो यूज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी 1 प्लस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी 1 प्लस एक्स into derivative of the second function यानी 1 minus x whole divided by square of the second function यानी 1 minus x whole square। आपने फ्रैक्शन लाइक फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें रैशनल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सिखाया गया। अब ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ। होल पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब दोनों फैक्टर्स के ऊपर पावर माइनस हाफ। 1 minus x as it is into derivative of 1 is 0, derivative of x is 1 minus 1 plus x as it is multiplied by derivative of 1 is 0, derivative of x is 1, so 0 minus 1 divided by 1 minus x whole square। मजीद सिंप्लीफाई करें तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स raised to the power minus half divided by 1 minus x raised to the power minus half into 1 minus x into 1, 0 plus 1 is 1, minus 1 plus x into minus 1 whole divided by 1 minus x whole square। मजीद सिंप्लीफाई करें मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा f prime x is equal to 1/2 multiplied by 1 plus x raised to the power minus half
divided by 1 minus x raised to the power minus half, multiplied by 1 minus x as it is, minus into minus is plus, प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एक्स से, तो इट इज सेम 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब अगर आप और करें तो माइनस एक्स और प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा 1/2 एज इट इज, 1 प्लस 1 इट इज 2 डिवाइडेड बाय, हम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ को हम वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसके बाद है 1 माइनस एक्स पावर 2, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके ये सिंप्लीफाई हो जाए। यानी हमने 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, पावर प्लस हाफ हो गई, बाकी 1 प्लस 1 इट इज 2। मजीद और करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा हाफ से, बाकी बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ into 1 minus x raised to the power minus half plus 2। इन दोनों के बेसिस सेम थे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस हाफ प्लस 2 इट इज इक्वल टू 3/2, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ into 1 minus x raised to the power 3/2। ये हो गया एफ प्राइम एक्स। आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसका मेकअप करना चाहें, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इट इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ into 1 minus x raised to the power half into 1 minus x। असल में 3/2 को अगर मैं ब्रेक कर दूं, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1/2। पावर 1 को अलहदा कर दें, पावर 1/2 को अलहदा कर दें, मैंने दोनों पावर्स को सेपरेट कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और जो रूट से बाहर है ये वैसे ही, इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एज इट इज इंटू, क्योंकि दोनों रूट के साथ हैं, तो दोनों रूट के साथ हैं तो इन्हें आप लिख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 minus x multiplied by square root of, using a plus b into a minus b, it is 1 square is 1 minus x square as it is। f prime x is equal to 1 divided by 1 minus x multiplied by root 1 minus x square। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप कोई सी भी फॉर्म ला सकते हैं। ये सवाल एक आध दफ़ा इम्तहान में आ चुका है। Now see part number 2। Part number 2 is f of x
f of x is equal to 3x square minus x divided by x into square root of 1 plus x square। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, लाइन ऑफ एक्शन बनाएं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल में डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये ऑप्शनल नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर लें तो जाहिर सी बात है आगे डिफ्रेंशिएशन में आसानी होगी। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो सामने ही है। न्यूमरेटर से आप x कॉमन लेके डिनोमिनेटर में मौजूद x से कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये x तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 divided by square root of 1 plus x square। अब ये क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के मुकाबले में ये मेरा ख्याल में सिंपल हो गया है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x, differentiate with respect to x, we write d upon dx of fx, it is equal to d upon dx of 3x minus 1 divided by square root of 1 plus x square। अब ये फंक्शन पावर n वाली शक्ल नहीं है, इट इज सिमिलर टू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन की जगह पे हो गया, ये सेकंड फंक्शन की जगह पे हो गया। अगर होल स्क्वायर रूट होता या होल क्यूब रूट होता तो फिर फंक्शन पावर n वाली शक्ल होती। तो यहाँ फंक्शन पावर n वाली शक्ल नहीं है, तो यूज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन की जगह 3 माइनस एक्स और सेकंड फंक्शन की जगह रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, रिजल्ट इज सेकंड फंक्शन यानी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 यानी फर्स्ट फंक्शन into derivative of the second function, and it is root 1 plus x square whole divided by square of the second function, square of 1 plus x square। अगर आप गौर करें तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो पुट की है, सेकंड फंक्शन into derivative of first function minus first function into derivative of second function whole divided by square of the second function। Now square root of 1 plus x square as it is into derivative of 3x is 3, derivative of 1 is 0, minus 3x minus 1 as it is, रूट को रिमूव करें पावर हाफ, पावर हाफ we use derivative of function power n which is equal to n into function raised to the power n minus 1। भाई स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे पावर हाफ हो जाएगी, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। तो इट इज सेम एज फंक्शन पावर n, तो हमने फॉर्मूला यूज किया n इंटू फंक्शन पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की जगह पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी राइट एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर, रूट हो गया कैंसिल, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है इसे हम बाहर लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि बार बार डिवीजन ना लिखनी पड़े, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 1 into half 1 plus x square raised to the power half minus 1, it is minus half, into derivative of x square 1 0, derivative of x square is 2x, 0 plus 2x is 2x. अब अगर आप और करें तो ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया उसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। ये हो गया f prime x is equal to 1 divided by 1 plus x square multiplied by 3 into square root of 1 plus x square minus x into 3x minus 1 इनको कैंसिल हो गया था, और ये जो पावर माइनस हाफ है इसे आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, पावर प्लस हाफ हो जाएगी, और पावर प्लस हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देख लें, पावर माइनस हाफ थी, इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, पावर प्लस हाफ हो गई, और पावर प्लस हाफ मीन्स स्क्वायर रूट। नाउ it is equal to 1 divided by 1 plus x square root 1 plus x square is the LCM, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट इंटू सेम रूट, रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस रूट कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर से तो नो चेंज, x इंटू 3x माइनस 1। हमने एलसीएम दिया, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 होगा, एलसीएम आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 इंटू रूट इंटू सेम रूट, तो रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो हमने लिख दिया। इसी तरह सेकंड टर्म में रूट कैंसिल, 1 बचा, 1 इंटू न्यूमरेटर नो चेंज, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर multiplied by 3 into 1 is 3, 3x square minus 3x square minus into minus plus 3 plus x divided by square root of 1 plus x square। तो अब अगर आप और करें तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा f प्राइम x इज इक्वल टू 3 प्लस x divided by 1 plus x square into square root of 1 plus x square. It is the most simplified form of derivative of the given function. ये मैंने चारों पार्ट आपको इस क्वेश्चन के करा दिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे तो सारे ही पार्ट हमें करने हैं, लेकिन इसके बाद पहले हम करेंगे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is
Question number 4. If f of x is given by, then find its uh, derivative. Part number 1, f of x is equal to e raised to the power 2x squared plus x. E raised to the power 2x squared plus x. To differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of fx is equal to b upon dx of e raised to the power 2x squared plus x. एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर फंक्शन. ई रेज टू द पावर फंक्शन जैसी शक्ल है और फंक्शन की जगह पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x. use derivative of e raised to the power function, which is e raised to the power function into derivative of function, derivative of 2x squared plus x. तो ये बन जाएगा e raised to the power 2x squared plus x as it is into derivative of 2x squared, it is 4x, derivative of x, it is equal to r. The most simplified form, it is 4x plus 1 multiplied by e raised to the power 2x squared plus x. ये हो गया derivative of the given function. Now see part number 2. You are given f of x is equal to 3 raised to the power, f of x is equal to 3 raised to the power 2x squared, 3 raised to the power 2x squared plus x. अब जाहिर सी बात है ये शक्ल ई पावर फंक्शन जैसी तो है लेकिन ई गिवन नहीं. तो ऐसी सूरत में आपके दिमाग में आना चाहिए ए रेज टू द पावर फंक्शन, ए की जगह पे 3 लिखा हुआ है, बाकी काम वैसा ही है. डिफरेंशिएट both the sides with respect to x. We write d upon dx of f of x is equal to d upon dx of 3 raised to the power 2x squared plus x. Now use derivative of a raised to the power function. Derivative of a raised to the power function, it is a raised to the power function into ln a into derivative of the function. F prime x is equal to a raised to the power function यानी 3 raised to the power 2x squared plus x as it is into ln a की जगह पे 3 है तो we write ln 3 into derivative of the function. So derivative of 2x squared plus x as it is. Now it is equal to 3 raised to the power 2x squared plus x into ln 3 into 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 4x, ये इंटू 2x मीन्स 4x और x का डेरिवेटिव हो गया 1. इसका मतलब रिजल्ट आ गया 4x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ln 3 multiplied by 3 raised to the power 2x squared plus x. ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. ये था पार्ट नंबर 2. Now come to part number 3. Part number 3 is
e raised to the power square root of x. F of x is equal to e raised to the power square root of x. To differentiate both the sides with respect to x, we write d upon dx of fx is equal to d upon dx of e raised to the power root x. Again, like part number 1, it is same as e raised to the power function. फंक्शन की जगह पे है रूट एक्स, तो एफ प्राइम एक्स हो गया डेरिवेटिव ऑफ ई पावर फंक्शन विच इज सेम ई पावर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. फंक्शन की जगह पे रूट एक्स है तो वी राइट सेम रूट एक्स. ई रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स यानी x raised to the power half. Use derivative of x raised to the power n to differentiate x raised to the power half. It is half x raised to the power half minus 1, it is minus half. अब इसे लिखा जा सकता है e raised to the power square root of x divided by 2. x पावर माइनस हाफ को आप अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो x पावर प्लस हाफ हो जाएगा और x पावर प्लस हाफ का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x. एफ प्राइम x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x. नाउ सी पार्ट नंबर 4. Part number 4. Part number 4 is f of x is equal to e raised to the power x multiplied by 1 minus x squared. ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9, इसका कोई एक पार्ट था. इसी तरह पार्ट नंबर 5 ये भी रिपीट हो रहा है. f of x is equal to e raised to the power x minus 1 divided by e raised to the power x plus 1. ये भी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 4 पार्ट थे, उनमें से ये भी एक पार्ट था. ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जाता है. नाउ सी पार्ट नंबर 6. Part number 6 is f of x is equal to ln of e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x. Differentiate both the sides. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of f of x is equal to d upon dx of ln of e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power x. f प्राइम x is equal to सवाल की शक्ल है डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन जैसे, तो फंक्शन की जगह पे ये पूरी चीज लिखी हुई है. एंड यू मस्ट नो डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो 1 अपॉन फंक्शन की जगह पे था e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power x divided by 1 plus e raised to the power x. इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए. 1 plus e raised to the power x divided by e raised to the power x and use derivative of first function upon second function. The derivative of first function upon second function. First function की जगह पे e raised to the power x, second function
की जगह पे 1 + e raised to the power x. To use derivative of first function upon second function, so according to formula, it is equal to second function यानी 1 + e raised to the power x multiplied by derivative of e raised to the power x minus first function into derivative of the second function whole divided by 1 plus e raised to the power x whole square. Second function into derivative of first function minus first function into derivative of second function divided by whole square of the second function. अब मजीद सिंप्लीफाई करें तो f prime x is equal to 1 plus e raised to the power x divided by e raised to the power x 1 plus e raised to the power x as it is, derivative of e power x is same, minus e power x as it is, derivative of 1 is 0, derivative of e power x is e power x, whole divided by 1 plus e raised to the power x whole square. Now it is equal to 1 plus e raised to the power x divided by e power x multiplied by 1 plus e raised to the power x into e power x minus e raised to the power x into e power x whole divided by 1 plus e raised to the power x whole square. आप न्यूमरेटर में से e raised to the power x कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में मौजूद है. e power x कॉमन लेने के बाद 1 plus e raised to the power x as it is divided by e power x. e power x आपने कॉमन लिया तो बाकी बच जाएगा 1 plus e raised to the power x from first term minus e power x from second term whole divided by 1 plus e raised to the power x whole square. तो plus e raised to the power x minus e raised to the power x ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1 plus e raised to the power x divided by e power x into e power x into 1 upon e raised to 1 plus e raised to the power x whole square. अब अगर आप देखें तो e पावर x कैंसिल हो गया और 1 प्लस e पावर x ये भी इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, मेरे ख्याल में आप लोगों ने नमाज पढ़ ली होगी. अब हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 तक. सी पार्ट नंबर 7. Part number 7 is f of x is equal to e raised to the power cos x. आप डिफरेंशिएट करें with respect to x and again use derivative of e raised to the power function. Differentiate both the sides with respect to x. So we write d upon dx of function of x. It is equal to d upon dx of e raised to the power function. ये हो गया f prime x. Derivative of e power function is same e raised to the power function multiplied by derivative of function. तो function की जगह पे cos x है, तो f prime x is equal to e raised to the power cos x
into derivative of cos x, it is minus sin x. F prime x is equal to minus sin x multiplied by e raised to the power cos x. ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, f of x is equal to e raised to the power sin x multiplied by cos x. E raised to the power sin x multiplied by cos x. So differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of f of x is equal to d upon dx of e raised to the power sin x multiplied by cos x. तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला आएगा। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन की जगह पे है ई पावर साइन एक्स और सेकंड फंक्शन की जगह पे है कॉस एक्स। तो यूज प्रोडक्ट फार्मूला, इट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन plus second function as it is multiplied by derivative of the first function. Now e raised to the power sin x as it is into derivative of cos x, it is equal to minus sin x plus ये cos x ये तो आप वैसे ही लिखेंगे और e पावर sin x को डिफरेंशिएट करने के लिए आप यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई पावर फंक्शन। फंक्शन की जगह पे है साइन एक्स। इसका मतलब ये हो गया ई रेज टू द पावर साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर फंक्शन, इट इज सेम ई रेज टू द पावर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स multiplied by e raised to the power sin x plus cos x e raised to the power sin x multiplied by derivative of sin x, it is equal to cos x. ये हो जाएगा minus sin x multiplied by e raised to the power sin x plus cos x into cos x is cos square x multiplied by e raised to the power sin x. आप e रेज टू द पावर साइन एक्स दोनों टर्म्स में मौजूद है, कॉमन ले सकते हैं। e पावर साइन एक्स कॉमन लिया तो बाकी बच गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फ्रॉम फर्स्ट टर्म यू लेफ्ट माइनस साइन एक्स, फ्रॉम सेकेंड टर्म यू लेफ्ट कॉस स्क्वायर एक्स। अरेंज कर लें, e रेज टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, पॉजिटिव टर्म पहले लिख दें, नेगेटिव टर्म बाद में लिखें। ये हो गया एफ प्राइम एक्स। अब ये सवाल तो हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट या फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यू आर गिवन एफ ऑफ टी। अब फंक्शन दे रखा है टी की फॉर्म में, इट इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो आप विद रेस्पेक्ट टू टी ही डिफरेंशिएट करेंगे।
ऑपरेटर d अपॉन dt बन जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ ln ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए, सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 में पढ़ लिया। डेरिवेटिव ऑफ एल एन फंक्शन इट इज़ 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। दूसरा तरीका ये है कि आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें। आपको शायद याद हो, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, log of a upon b, it is equal to log of a minus log of b। याद आ गया होगा। So it is just like a and it is just like b। तो log of a upon b की प्रॉपर्टी यूज करके आप डिवीजन को खत्म कर सकते हैं, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉग प्रॉपर्टी। f prime t is equal to डेरिवेटिव ऑफ, जिसे मैं लिख सकता हूँ ln of 1 minus t square minus ln of 1 plus t square। अब ये हो गया सम और डिफरेंस। हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, a की जगह पे था 1 माइनस टी स्क्वायर, b की जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लॉग ऑफ a अपॉन b इट इज लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये सम और डिफरेंस की फॉर्म बन गई। आपका काम आसान हो जाएगा, डिवीजन फार्मूला यूज करने से बचत हो जाएगी। We write d upon dt of ln of 1 minus t square minus derivative of ln of 1 plus t square। Now use derivative of ln function which is equal to 1 upon function 1 divided by 1 minus t square into derivative of 1 minus t square। Derivative of ln function, फंक्शन की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑफ एन फंक्शन। अब फंक्शन की जगह पे है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। नाउ इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। Derivative of 1 is 0, derivative of t square is 2t, same as derivative of x square which is 2x, minus 1 divided by 1 plus t square into derivative of 1 is 0, derivative of t square it is 2t। तो ये हो जाएगा 1 upon 1 minus t square into minus 2t minus 1 upon 1 plus t square into 0 plus 2t it is 2t। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 1 into minus 2t it is minus 2t divided by 1 minus t square minus 2t divided by 1 plus t square। minus 2t can be taken common, दोनों टर्म्स में मौजूद है। बाकी बचा 1 divided by 1 minus t square plus 1 divided by 1 plus t square। Now it is equal to minus 2t multiplied by LCM लें
1 minus t square into 1 plus t square is the LCM. 1 minus t square cancel, you left 1 plus t square into 1 plus 1 plus t square cancel, you left 1 minus t square. अब ये प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा माइनस टू टी मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई a minus b into a plus b, it is a square minus b square. Minus 2t into 2, it is minus 4t divided by 1 square is 1, t square whole square, it is t power 4. ये हो गया भाई f prime t. The most simplified form of derivative of the given function is minus 4t divided by 1 minus t power 4. अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सॉल्व करता है तो वो डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन यूज कर सकता है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. जब वो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेगा तो फिर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट नंबर 6 ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया. नाउ सी पार्ट नंबर 2. f of t is equal to ln of t square plus t. Differentiate both the sides with respect to t. ये हो जाएगा d अपॉन dt of f of t is equal to d upon dt of ln of t square plus t. आप डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन यूज कर सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ ln फंक्शन it is equal to 1 upon function into derivative of function. ये हो जाएगा f prime t is equal to 1 divided by function. फंक्शन की जगह पे है t square plus t into derivative of function. Derivative of t square plus t. Now it is equal to 1 divided by t can be taken common. You left t plus 1 into derivative of t square, it is 2t. Derivative of t, it is equal to 1. तो ये हो जाएगा 2t plus 1 whole divided by t into t plus 1. ये हो गया f prime t. The most simplified form of derivative of the given function with respect to t. Now see part number 3. Part number 3 is f of t is equal to ln t whole raised to the power 5. ln t whole raised to the power 5. Differentiate both the sides with respect to t. We write d upon dt of f of t is equal to d upon dt of ln t whole raised to the power 5. F prime t is equal to, it is same as derivative of function raised to the power n. फंक्शन की जगह पे है ln t और n की जगह पे है 5. तो इसका मतलब ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ln t raised to the power 5 minus 1 into derivative of function. Function is ln t.
f prime t is equal to 5 into ln t raised to the power 4. Derivative of ln t, it is 1 upon t, same as derivative of ln x, which is 1 upon x. इसका मतलब f prime t ये हो जाएगा 5 into ln t raised to the power 4 divided by t. It is the most simplified form of the derivative of this function. अब अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी तब्दीली कर दें, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली कर दें, फर्ज करें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होता f of t raised to the is equal to ln t raised to the power 5, होल पावर 5 नहीं होता, तो फिर आपके दिमाग में फॉर्मूला लॉग की प्रॉपर्टी आ सकती थी, याद होगा शायद, फिर भी लिख देता हूँ, log of a raised to the power b, it is equal to b into log of a. Log of a power b, it is b into log of a. इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं f of t is equal to 5 times ln t. भाई a की जगह पे b है, b की जगह पे 5 है, तो log of a पावर b, it is b times log of a. इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो अब फंक्शन पावर n वाली शक्ल नहीं है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, it is equal to d upon dt of f of t is equal to d upon dt of 5 into ln t. 5 is constant taken outside, d upon dt of ln t, and derivative of ln t is 1 upon t, so 5 into 1 upon t. It is equal to 5 into 1 is 5, 5 upon t, ये हो गया f prime t. आप खुद इन दोनों सवालों को कंपेयर करके देख लें, यहाँ पे पावर 5 ये सिर्फ t पे नहीं है, ये ln t पे है, इसलिए फंक्शन पावर n यूज किया। यहाँ पे पावर ln पे है ही नहीं, सिर्फ t के ऊपर पावर 5 है, इसलिए हमने पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी, लॉग ऑफ a पावर b विच इज इक्वल टू b टाइम्स लॉग ऑफ a। तो फार्मूले अगर बेटा अच्छी तरह याद नहीं है तो इन्हें बहुत अच्छी तरह याद कर ले। अब सारे फॉर्मूले एक साथ इस्तेमाल होते रहेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी और मॉडिफाई होंगी। इंशाअल्लाह ताला यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।